Good morning, students. Welcome to Learning at Renuka. Myself, Mrs. Sakshi Naik. Today, I am going to explain you the third qualitative method, the third qualitative weapon which central bank uses to control the credit. In my previous lecture, I already explained you the two qualitative methods, rationing of credit and margin requirement. The third method which is used to control the credit by the central bank is moral suasion. Now students, what is this moral suasion? What do you mean by moral suasion? See, central bank, RBI, fixes some of the rules and regulations, the laws, okay, for all the commercial banks. It fixes the rules and regulations, laws for all the commercial bank. And if any commercial bank does not follow any of these rules or it break any of the laws or regulation, then our central bank RBI, okay, our central bank RBI will first of all tell that commercial bank with love, will explain the commercial bank with love. ओके, विल एक्सप्लेन द कमर्शियल बैंक विथ लव. इसका मतलब है पहले प्यार से कमर्शियल बैंक को समझाएगी. ओके, द फर्स्ट स्टेप दैट आरबीआई विल डू इज विद लव दे विल एक्सप्लेन. पहले प्यार से समझाएगी. जैसे आपके पेरेंट्स कैसे आप कोई मस्ती करते हो तो आपको पहले प्यार से समझाते हैं. ओके, सेकेंड, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं सेकेंडली, अगर आप नहीं सुनते हो तो दे विल स्कोल्ड यू. Okay, in the same way, RBI will give warning that if you will still not follow the rules and regulation, then see what will happen. Still, if commercial bank does not listen to RBI, then the third step, the major step taken is RBI will de-recognize that commercial bank. What do you mean by de-recognize? डी-रिकग्नाइज का मतलब क्या है? आरबीआई विल नॉट रिकग्नाइज दैट कमर्शियल बैंक. ओके, अब ये नॉट रिकग्नाइज का मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? आरबीआई विल नॉट कंसर्न विद दैट बैंक. आरबीआई विल टेक आउट ऑल द कनेक्शंस. अपना उसका जो हाथ है हर एक कमर्शियल बैंक से, वो अब उनका हाथ वो उठा लेगी. और एक बार आरबीआई ने किसी बैंक को डी रिकग्नाइज कर दिया, देन no other bank will help that bank. No government will help that bank. Even the people, the local people, the public will not invest any rupee or will not put any sum, any money in that commercial bank. ना लोग वो बैंक में पैसा भरेंगे, ना वो बैंक चलेगा. This is called as de-recognition. Okay, this is what is moral suasion. Thank you.